the system of linear equation. So if we have the system of linear equation, then the equation may be inconsistent or consistent. If system is inconsistent, it means it has no solution. Okay. If the system is consistent, then it means unique solution and infinite number of solution. If the field is infinite, remember it, if field is infinite. Here we are taking the field is R or set of complex number, of course, or set of rational number. If there is ZP, then system has always either the unique solution or finite number of solution. Remember it. तो जनरली हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रियल लाइफ में सेट ऑफ रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए फील्ड चूज करते हैं. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिस्टम ऑफ linear equation either consistent or inconsistent. Now system homogeneous linear equation. We have two type of system of linear equation. One is homogeneous linear equation and next is non-homogeneous linear equation. First we are writing the definition of homogeneous linear equations. Okay, the system one, of course हम उसी को लेंगे जिसमें m equation and n variables थे. The system 1 is said to be a system of m linear equation in n variable. Say nx equals to b is said to be a homogeneous if all the constant terms are 0. That is, b equals to null matrix, or we can say bi equals to 0 for all I varies from 1 to m. So hence a system ax equals to 0 is known as homogeneous linear equation. For example, x plus y equals to 0, x minus y equals to 0. This is the homogeneous linear equation. We can easily find its solution again. Number 2, x1 plus x2 plus x3 equals to 0, x1 minus x3 equals to 0 is again a homogeneous linear equation. So we will always remember, if the system is like this is always the homogeneous system. Now we are trying to solve in the example 1 and 2 of the homogeneous linear equation. Okay, from example 1 is x plus y equals to 0 and this one is x minus y equals to 0. If we solve this, then just add, then 2x equals to 0, which is x equals to 0 and y equals to 0. So the solution is xy, which is 0, 0. Okay, this is the solution of the system 1, which is example 1. Solution of example 1. Okay, now second is given x1 plus x2 plus x3 is equal to 0, x1 minus x2 minus x3 equals to 0. So if we form the augmented matrix, this is 1 1 1 1 0 minus 1 0 0. If I reduce this matrix into the echelon form, then R2 is reduced by R2 minus R1. So this is 1 1 1 0, this is 0 minus 1 minus 2 0. Okay, this one is the echelon form. Now we can see here the new system will be x1 plus x2 plus x3 equals to 0 and minus x2 minus 2x3 equals to 0. Okay, so here x2 is equal to minus 2x3.
So we can easily see value of x2 is totally depending on x3, or we can see x2 अब यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको किसको फ्री वेरिएबल ले रहे हैं, बिकॉज यू कैन write here of course x3 is 1 by 2 minus 1 by 2 x2. So here we can see x3 is totally depending on x2, and here we can see x2 is totally depending on x3. एक दूसरे पे डिपेंड तो करेगा ही, जब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है x2 अगर x3 पे डिपेंड कर रहा है तो x3 x2 पे भी डिपेंड कर रहा होगा. सो हियर अब मैं इसको ले रहा हूँ, इस वाले को. सो x3 इज, वी कैन सी x3 इज फ्री वेरिएबल. मैं इसको फ्री वेरिएबल कहूँगा बिकॉज वी कैन चूज x3 freely. So for each value of x3, suppose x3 equals to k, we get x2 equals to minus 2k, and it implies x1 equals to 2k minus k. Yani this is again k. So the solution of x1, x2, solution of the system, this 2 is equal to, this is what? Value of x1 is k, value of x2 is minus, what is value of x2? x2 is minus 2k here, and x3 is k. So for arbitrary choice of k, we have infinite solution of example 2. Okay, here we choose the x3 is free variable. You can choose the x2 is free variable. Direct you can choose the x1 is free variable from here. So it's depending on you which variable are you choosing free. For additional example 3, 1, suppose I have a system x plus 2y plus 3z equals to, okay चलो और ले लेता हूँ, plus 4z is equal to 0. Then if we write x is equal to minus 2y minus 3y minus 4z, then the x is totally depending on, because this is okay, यहाँ ये w लेना है, ये w लो, ये एक जैसा हो गया, this is w, this is z. Okay, this x is totally depending on y, z and w, y, z and w. So we can see here y, z, w, they are free variable. So it has three free variable, t1, t2, t3, free variable, and x is depending on t1, t2, t3. Thus the solution should be x, y, z, w is the solution should be. We take y, z, w are free. So this is if t1, t2, t3. Then the value of x should be minus 2t1, minus 3t2, minus 4t3. This is the solution of the equation. The system example in 1. ये system है. Okay, this one is system. इस system के लिए this one is the solution. So the system, अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ the system which is given in the example 3 as 3 free variable. Okay, 3 free variable, and the system which is given in example 2 as only 1 free variable. कोई भी वेरिएबल ले लो लेकिन काउंटिंग में 1 ही होगा. अब यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल चूज कर लो, 3 ही फ्री वेरिएबल मिलेंगे. Similarly, you can find in any general cases, you can find number of free variables in any system of homogeneous linear equations. Okay, so some results for the homogeneous linear equations. Results or note. Okay, every homogeneous system is consistent. It means that every homogeneous system has at least one solution. So every homogeneous system is consistent कह रहा है, it means it has solution. तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे this is why because
x equals to 0 is always solution of homogeneous system, and this solution is called trivial or superflow or self-obvious solution of homogeneous system. Remember one thing here, nothing is obvious in the mathematics. Okay, बोला है इसको obvious solution, it means it has reason. Okay, it has reason because every homogeneous system can be satisfied by 0. So here this solution is called trivial solution or superflow solution or self-obvious solution. Any solution x बराबर 0 is trivial solution. Okay, ये तो होगा ही होगा. अगर इसके अलावा भी है, okay, अगर इसके अलावा भी कोई solution exist करता है, then we say the solution is non-trivial solution. और trivial solution को क्या क्या कहते हैं? Other than x equals to 0, the solution is called a non-trivial solution of the system. System here homogeneous, यहाँ पे throughout homogeneous system की बात हो रही है. Results है, suppose x1 x2 are the two solutions of homogeneous system, then k1 x1 plus k2 x2, where k1 k2 are scalars, is also a solution of this ax equals to 0. You can easily prove because ax1 equals to 0, ax2 equals to 0 because x1 x2 is the solution of this, so x1 x2 must satisfy this relation. So you have to show a of k1 x1 plus k2 x2 equals to 0, then this must be solution of this. We can easily operate and get the 0. You can easily prove. I need not to be proof everything. Number 3rd, if A is coefficient matrix of homogeneous system, then after applying any number of E transformation, it will remain coefficient matrix of the given system of equation. Okay, ध्यान से सुनो इसको. If A is coefficient matrix of homogeneous system, then after applying any number of elementary row transformation, it will remains coefficient matrix of the given system of equation. It means if A is row equivalent to A1, then Ax equals to 0 and A1x equals to 0 gives the same solution. ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो कांस्टेंट कॉलम है वो 0 है, उसमें कितने भी रो ऑपरेशन लगा लो रिमेन 0. तो ये इसलिए हो रहा है, केवल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने पे सॉल्यूशन इसलिए आ रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स 0 है. दिस केस इज ओनली फॉर द होमोजीनियस सिस्टम, ध्यान रहे, because we are writing the result for the homogeneous system. Number 4, if rank of matrix A equals to R, suppose, then the system Ax equals to 0 has R linearly independent rows, or we can say rank of coefficient matrix A equals to R, then the system Ax equals to 0 has R linearly independent equation, because the row represent the equation here, and the remaining m minus r equation are linearly dependent. इसके लिए जस्ट एक एग्जांपल देख सकते हैं हम. जस्ट अभी हमने किया था एग्जांपल, आई थिंक एग्जांपल 3 था, जिसमें x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4w इक्वल्स टू 0 लिया था. ओके, सो अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं. इट विल बी 1 2 3 4 एंड दिस वन इज x y z w. दिस इज इक्वल टू ओनली 0. दिस इज 0 मैट्रिक्स, केवल 0 ही आएगा इसमें, एक ही है. अब ध्यान से देखना, अब व्हाट इज रैंक ऑफ दिस? रैंक ऑफ दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A, दिस वन इज A, this is x equals to b is 0. Okay, b is 0.
rank of A, just we are getting the rank, so we have the only one row, we are just finding the rank. So rank of A should be 1. It means only one is li row. Of course इसमें तो एक ही रो था, इसमें तो एक ही रो था. We are taking the another example. X plus y equals to, suppose, x minus y equals to, suppose, again 2, and 2x minus 2y equals to 4. चलो प्लस लिख लेना, ये ठीक है. अगर मैं इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ओ, बट राइट हैंड साइड इज नॉन जीरो, सो दिस इज नॉट अ होमोजीनियस. ओके, सो हमें एग्जांपल लेना है हमें होमोजीनियस का, तो राइट हैंड साइड शुड बी जीरो. सो अगर मैं यहाँ पे इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, 1 1 1 minus 1 2, ओके 2, ये वाला. Just we are writing the coefficient matrix. So if we operate R3 minus R1, so this is 1 minus 1 0 0. We are copying the 2, we are copying the result 3 and 4 by this example. So here now next, if again R2 minus R1, then I will get this 0 minus 2 0 0. Okay, so we get the system has unique solution, zero solution. Okay, because from this we get the y equals to 0, from this x equals to 0. So x equals to 0, y equals to this 0, satisfy the all conditions. So we will get the zero solution, trivial solution. Now what this row represent, what they all row represent. Okay, since we can see easily here, rank of A is 2, because we have the 2 li row. So and this 0 row is linearly dependent, which is 3 minus 2 1, 3 minus 2. ओके, ये हमारा LD रो आ गया, ये इक्वेशन. It means that this equation is depending on first equation. This equation depending on first equation. तो ये रिजल्ट ये कह रहा है. ओके, और ये थर्ड वाला रिजल्ट कह रहा था, अगर रो ऑपरेशन लगा लो ए में, तो इससे देने वाला सोल्यूशन और इससे देने वाला सोल्यूशन सेम होगा. यहाँ पे 0,0 सोल्यूशन, तो यहाँ इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, इट विल बी गिव द सेम सोल्यूशन. ठीक है, तो x बराबर x equals to 0, y equals to 0 is the solution of this system. Now we are extending the result 4, which is very important result. So now we are finding the number of linearly independent solution of m homogeneous linear equation in n variable. The number of linearly independent solutions of m homogeneous linear equation in n variables. It means the homogeneous system of m linear equation in n variable. Suppose this is a x equals to 0. This is n minus rank of a matrix, n minus rank of coefficient matrix. ध्यान से देखना, that is, it means the number of li solution we are writing. If the coefficient matrix Aij is m cross n, where m is the number of rows, it means number of equation, and n is the number of variables, then the number of li solution of this system is equal to number of variable, which is n, minus rank of coefficient matrix. ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, you can easily see here. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए. अगेन पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट वाला. इसमें था फोर्थ में दिया था हमने फर्स्ट वाला, x 2y plus 3z plus 4w equals to 0. ठीक
Okay, this is example. This is the system of homogeneous equation. Okay, now total number of variables are 4. We can see here x, y, z and w. What is the rank? Rank of coefficient matrix is 1, because this coefficient matrix is nothing but 1, 2, 3, 4. This one, okay, this is A. So its rank is 1. So the number of Li solution of this को हम लिख सकते हैं ax equals to 0 of ax equals to 0, where a is this and x equals to x, y, z, w column form में. So this is equal to, what is this, 4 minus 1 and minus rank of a, which is 3. अब ये क्या क्या होंगे हम देख सकते हैं यहाँ पे. अगर मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं होता, मैं ऐसे देखूंगा. We have 3 free variable. से उसको नाम दे दिया मैंने T1, T2 and T3. 3 ऑलरेडी हम इस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. So 3 we have free variable and another 4th is depending on these 3 variable. Suppose this is y की वैल्यू है, this is y, z की वैल्यू ये है and w की वैल्यू ये है. So the x will be minus 2 t1, minus 3 t2 and minus 4 t3. So our solution should be what? Minus 2 t1, minus 3 t2, minus 4 t3 and then t1, t2, t3. अब Li solution हमें फाइंड आउट करना है. तो Li solution के लिए if I choose t1 equals to 1, t2 equals to 0 and t3 equals to 0, I will get here minus 2, 1, 0, 0. If I take t1 equals to 0, अब t2 को 1 रख लेता हूँ, t3 को 0 कर लेता हूँ. So I will get here what? This one t1 is 0, t2 is 1, t3 is 0 and this one will be minus 3. And similarly, if t1 0, t2 0 and t3 will be 1, then we will get here minus 4, 0, 0 and 1. Only these 3 solutions are independent. Okay, only 3 solutions are independent, because we just see here, because it is independent, we can write this form minus 2 t1, 0, 0. अगर मैं इसको 3 अलग अलग मैट्रिक्स में डिवाइड करूं, t2 और t1, t2, t3 के बेस पे अलग अलग मैं इसको एक्सप्रेस कर दूं 4 t3, 0, 0, t3. ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ. सो अगर मैं t1 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा, t2 कॉमन ले लूँ ये बनेगा, t3 कॉमन ले लूँ ये बनेगा. यानी इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारा ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है. यानी ये सॉल्यूशन, दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन एक्स है. तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही ये बन रहा है, पूरा सॉल्यूशन है. सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हो, टेकिंग एनी कोएफिशिएंट a, b, c and solving this. a, b, c should be 0. वो आएगा ही, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, सिंपल है. सपोज दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3. सो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से सॉल्व होके a बराबर 0, b बराबर 0 एंड c बराबर 0 आ जाएगा. सो दिस इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हम डिटेल में तो जब वेक्टर स्पेस करेंगे तभी पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जब m होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है इन n वेरिएबल इस तरीके के लिए, तो
नंबर ऑफ Li सॉल्यूशन जो होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए इक्वल होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। सो ये तो था एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब देखिए ये कैसे हो रहा है। अब यहीं पे अब हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, ये हो कैसे रहा है। तो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन सपोज आ गया x1 x2 and so on xr and xr plus 1 xr plus 2 and so on xn। ओके, इस तरीके से कि if the rank of a is r, if rank of here, ठीक है ध्यान से देखना है हमें, if rank of a coefficient matrix r, rank of coefficient matrix is r, then these variable are free। क्योंकि n माइनस रो तो जीरो हो जाएंगे नीचे, क्योंकि ये जो r रो जो होंगे वो नॉन जीरो रो होंगे, यानी वो Li होंगे क्योंकि रैंक इसकी r है। ठीक है, तो बाकी जितने भी होंगे यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं n माइनस r, बिकॉज यहाँ तक आ रहे टोटल n है, तो n माइनस r यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो n माइनस r होंगे। ठीक है, वो n माइनस r विल बी फ्री वेरिएबल, नंबर की बात हो रही है। ठीक है, n माइनस r नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल आर n माइनस r। अब ये n माइनस r फ्री वेरिएबल इधर भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर तो इतने ही होने वाले हैं फ्री वेरिएबल्स। तो जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे उतने ही Li सॉल्यूशन होंगे, बस ये ध्यान रख लो। अब आप अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल आर 3, तो इसके पास 3 Li सॉल्यूशन थे। जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ Li सॉल्यूशन होंगे, हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो जस्ट अब इतना ही याद रखना है आपको, फ्री वेरिएबल आपको कैसे देखना है वो आपको पता है, देन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ Li सॉल्यूशन, ध्यान रखना।